Good morning, students. Today we are going to start a new lesson, that is lesson number 9, light. So, children, we have already uh, done chapter number 4 at the last, I think, na chapter 4, lesson 8, and all these. We will do chapter 5 and chapter 6 later on. Okay, so first of all, today I am going to start lesson number 9, light, which is on page number 73. So kindly open your books at page number 73. Light. So children, all of hope all of you know what is light, isn't it? Light क्या होता है? Light in which we can see. So what we are going to learn in this chapter, first of all, see that at the end of this chapter learners will be able to, मतलब जब अपन ये पूरा चैप्टर लर्न करेंगे तब हमें क्या पता चलेगा? डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ लाइट मीन्स यू कैन से व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ द लाइट. यू कैन easily identify the sources of light. एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ लाइट. लाइट का क्या फीचर्स होते हैं, लाइट का क्या स्पेशलिटीज़ है, यू कैन ईजिली एक्सप्लेन देम ऑल्सो. आइडेंटिफाई ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्क्राइब शेडोज. आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स किसको बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स किसको बोलते हैं, उनकी डिफ्रेंसिएशन पता चलेगी. एंड डिस्क्राइब शेडोज, हाउ शेडोज आर फॉर्म्ड, वाई शेडोज आर फॉर्म्ड. ये सब भी आपको अच्छे से क्लियरली एक आइडिया हो जाएगा. सो एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी कैन come to learn about all these points. So first of all, see the column that is given here, think about it. So let us think about something which is given here. What is common? Here there is a question, that is what is common. Few pictures are given here, and what is the common thing among all these pictures, that we have to find out. What do the sun, a candle, a torch, or a lantern have in common? So we can see a picture of the sun, candle, lantern, and a torch. So here our question is, what do they have in common? ये सब commonly हमें दे, इन सब में common thing है. What is that? We have to think about that. Yes, what sun means आपको तुरंत क्या याद आता है? Yes, we can get sunlight. Candle, why will we लिट अ कैंडल? कभी भी हम कैंडल को क्यों जलाते हैं? बिकॉज इफ़ वी नीड लाइट, मोस्टली लाइट की ज़रूरत पड़ती है तभी आप, मीन्स कैंडल ऑल्सो गिव्स लाइट. लैंथर्न, येस, वी कैन सी इन द लाइट ऑफ द लैंथर्न. टॉर्च, व्हेन यू विल यूज टॉर्च, इफ वी need light in a dark space, we always use torches, isn't it? So what is the common thing now? You can easily say, yes, what is the common thing that we can see among all these items is light. We can get light from these items. So obviously अभी आप ये बोल सकते हैं कि all these are sources of light. Source means the place from where we are getting something, कहाँ से वो चीज़ हमें मिल रही है. So all these are sources of light. All these are the items which provide us with light. So the common thing here is the light. Look at the pictures given below. Okay, we have done this, and now before moving ahead into the chapter, just look at the pictures given below. We can see picture 1 and picture 2. So look at these pictures carefully. In which picture can you see things clearly? In which picture can you see all the things clearly? Now first of all, refer to picture number 1. What we can see? Yes, a boy is on his bed, and we can see a clear window, curtains, everything आपको clearly दिख रही है. Now let us move to the second picture, picture number 2. See here, a girl or woman is sleeping, I think, on her bed, and we can see the moon also outside of the window, है ना? We can see moon here and we can see sun here. So which picture is more clear for you? आप इन दोनों पिक्चर में किस पिक्चर में सारे थिंग्स को बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं, बताइए.
obviously in picture 1, because picture 1 denotes the daytime. it we can ये picture 1 में देखो ये इसमें जो boy है, he is just waking up, means it denotes the morning daytime. And in the second picture the lady is lying on the bed, means she is sleeping at night. So you can see the things more clearly in picture 1, isn't it? Because it shows daytime. Daytime में दिन में आप हर चीज़ कितना clearly देख सकते हो. आप अपनी bedroom में morning में देखिए, we can see each and everything without using light. You can pick up any item that you need from that particular room. But if it is night time, what you used to do? अगर रात में क्या करोगे आप? ऐसी कोई चीज़ उठाएंगे? Yes, if it is our home we can easily identify, but still we used to on the light, because हाँ कहाँ रखी हूँ, प्रॉपरली दिख नहीं रही है, एक बार अच्छा से देखूँ, ऐसा सोच के हम लाइट ऑन करते ही हैं. सो वी कैन clearly say that we can see all the things in picture 1 clearly, as it is the daytime. Picture 2 shows night time, so you cannot see things clearly, है ना. रात में हम कोई भी things को clearly देख नहीं सकते हैं, because of the darkness we cannot see all the things clearly. Dark means there is no light. What do you mean by darkness? Light means रोशनी होना, lighting रहना. But what do you mean by dark means absence of light, मतलब there is no light, light है ही नहीं, उसी को हम darkness बोलते हैं. Light help us to see things. Why we use light? क्यों चाहिए हमको? Why do we need light? Light क्यों चाहिए? Light helps us to see things. कोई भी चीज़ को आपको देखना है तो हमें लाइट की ज़रूरत है. What helps you see things during the day? दिन में आपको बिना लाइट ऑन करके ही आप बाहर आराम से निकलो, रोड पे आराम से आप सारे काम कर सकते हैं. डे टाइम में सब टॉर्च वगैरह, लैंथर्न्स, ये सब लेके बाहर निकलते हैं क्या? नो, because we have a very natural source of light, that is the sunlight, which is very important for each and every human being for the existence of life on the earth पे लाइफ एग्जिस्ट होने के लिए द मेन रीज़न इज़ द वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ सनलाइट ऑल्सो. बिकॉज सनलाइट की वजह से आप बाहर कोई भी टाइम पे कहीं पे भी जाओ आओ, आराम से जा रहे आ रहे, है ना. वी आर नॉट कैरिंग एनी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट अलॉन्ग विद अस इन द डे टाइम. मेड बी एट होम, मेड बी ऑन द रोड, मेड बी एट योर स्कूल्स, कहीं पे भी हो, आप आराम से दिन में कोई आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करने के बिना अपनी काम आराम से कर सकते हैं. वाई? बिकॉज द सनलाइट इतना एनर्जेटिक सनलाइट आपको मिलती है तो कोई लाइट की ज़रूरत है ही नहीं. सो how can we see the things during the day? Because of sunlight. Now let us move to the next paragraph. Sources of light. Source, from where we are getting this light from. Let us discuss about this. Anything that gives out light and help us see is a source of light. So आपको light की source किसको बोल सकते हैं अपन? anything which gives out light, which can produce light, which can provide us with light and help us see, हम ताकि उस रोशनी में हम देख सके, that is nothing but a source of light. So कहीं से भी वो कोई भी आइटम हो, मैन मेड हो, नेचुरल हो, कोई भी चीज़ से आपको अगर दिख रही है, आप देख पा रहे हैं, मीन्स इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट. एनीथिंग that gives out light. So children, say along with me, what do you mean by source of light? बेटा source of light क्या होता है? Anything that gives out light and help us see. Why do we need light? Light क्यों चाहिए? In order to see anything we need light. So anything that gives out light and help us see is a source of light. द सन इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे. ये हमें बहुत अच्छा से पता है. पूरा दिन में अपन आराम से घूम रहे फिर रहे, सब काम कर रहे. वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स भी अपनी फूड बनाते हैं. कितना इम्पोर्टेंस है सनलाइट की. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी आर डूइंग ऑल आवर वर्क द डे टाइम वेरी इजीली. बट इतना इजीली आप रात को कर सकते हो क्या? कैन यू डू? नो. It is a natural source of light. So from where the sun is getting the light? sun को light कहाँ से आई है? It is a natural source. वो naturally sun में light की source है.
what else can be a natural source of light? सन के अलावा और कुछ और भी बहुत सारे sources of light है, वो क्या हो सकते हैं? what else means और इसके अलावा और भी क्या sources of light है जो नेचुरली आए? आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम बल्ब, लाइट, ये सब जो आर्टिफिशियल टॉर्च, ये सब आप बोल नहीं सकते हो. what द क्वेश्चन इज, what else can be a natural source of light? इनके अलावा और नेचुरली जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है? यस, ऑब्वियसली स्टार्स. रात में आपको स्टार्स की वजह से हमको थोड़ा लाइटिंग आता है, बट व्हेन कंपेयर्ड विथ सन के साथ अगर कंपेयर करें तो उतना लाइटिंग स्टार्स में नहीं होता है. बट स्टिल वी कैन सी अ लिटिल इन द डार्क इन द एट नाइट्स बिकॉज ऑफ द लाइट गिवन बाय द स्टार्स. एंड अनदर मोर थिंग, फायर भी बहुत नेचुरली. अर्ली ह्यूमन बीइंग्स पहले लाइट को कैसा फाइंड आउट किया? वेरी नेचुरली यूजिंग द फायर इटसेल्फ. हाँ, लाइट से ये सब होता है करके. नहीं तो पहले वो दिन में सब काम करते थे, रात में कुछ भी नहीं करते थे. आफ्टर 5:30 to 6 सनसेट के बाद उनकी कोई काम नहीं होता था अर्ली ह्यूमन बीइंग्स का. बट नाउअडेज वी आर डूइंग एवरीथिंग बिकॉज वी केम टू नो दैट हाँ, we can see even in the presence of dark by using some artificial sources of light. So fire को भी हम natural source of light में consider कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट एल्स कैन बी द नेचुरल सोर्सेस ऑफ द लाइट? और क्या हो सकते हैं? स्टार्स है, स्टार्स का भी अपनी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, वो भी अपना लाइट दे सकते हैं. एंड इवन फायर, आप कुछ स्टिक्स लीजिए. स्टिक्स कहाँ से आए हैं अपने पास? वुडन स्टिक्स, वुड, ये सब कहाँ से आए हैं? नेचर से. सो उस पर आप मैच स्टिक से लिट करके देखिए. फायर की रोशनी में भी हम कोई भी काम डार्क में कर सकते हैं. सो वी कैन कंसिडर फायर एज ऑल्सो एज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. Now we came to know how can we see all the things in the daytime. Now let us discuss how we can see in the dark. How do we see in the dark? How? We need a human made source of light to see in the dark. Yes, we need a human made source of light. जिस आपको what are natural things, what are man made things, we have discussed all about these in your class 2 itself. आपको ये पता है natural things मतलब जो नेचर से हमें मिले हैं. मैन मेड थिंग्स मतलब जिसको इंसान ने, ह्यूमन ने बनाया है. सो इन ऑर्डर टू सी इन द नाइट्स, मतलब इन ऑर्डर टू सी इन द डार्क, नाइट में ही नहीं, कभी भी दिन में भी कोई डार्क प्लेस है, कोई घर है जिसमें बिल्कुल डार्क वाली प्लेस जहाँ बिल्कुल सनलाइट रीच नहीं हो पाए, ऐसी जगह में आपको देखने के लिए आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड? वी नीड अ ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट. इंसान से बना हुआ कोई भी ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट चाहिए हमें टू सी इन द डार्क, ताकि अंधेरा में हम देख सके. हियर आर सम ह्यूमन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट. सो इजीली आप सबको बहुत सारे ह्यूमन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट पता है, बिकॉज वी ऑल यूज दीज सोर्सेस ऑफ लाइट एट आवर होम्स. They help us to see in the dark. Yes, these sources of light help us to see in the dark, which are made by human, such as torch. Yes, we use torchlight when we go out at night. And bulb should be there in each and every room if we want to use that room in at night. And third one, CFL bulb. We can see CFL bulb also. What is the full form of CFL? Compact fluorescent लाइट. व्हाट इट इज? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट. ये स्मॉल बल्ब भी आप घर पे देख सकते हो. एंड आजकल बहुत सारे CFL लाइट्स भी हम यूज़ कर रहे हैं. केरोसिन लैम्प मतलब इसमें केरोसिन ऑयल डाल के हम इसके अंदर एक विक होता है, उसको लिट कर सकते हैं. अंदर जैसे दिया जलाते हैं ना अपन बत्ती से, इन द सेम वे ऑयल की जगह केरोसिन ऑयल यूज़ करेंगे इसमें, और इसको जला के हम इसकी रोशनी में भी काम कर सकते हैं. टेबल लैम्प, यस, वी यूज टू सी मोस्टली इन at every home. So these are the sources of light which are made by human and which are called human made sources of light. What is the main use of these human made sources of light, beta? These are helpful for us to see in the dark, isn't it? We can see in the dark by using some human made sources of light. So we have discussed about what is light, light क्या है, and why do we need light, light क्यों चाहिए in order to see the
things. And during daytime we can see all the things naturally where sunlight can reach. Because of the presence of sunlight we can see all the things clearly. But at night, and even in even at the daytime where the sunlight cannot reach and where the place is very dark, we have to use some human made sources of light. So children, ये light आपके लिए ये new chapter है class 3 में. So today I am going to stop here itself. So go through this space completely, listen the video carefully, and after that try to read each and every word from the chapter and try to know the meaning of each and every word and sentence. Thank you.